skeletal muscle contraction. Neuromuscular junction. Neuromuscular junction is the site where a motor nerve fiber and a skeletal muscle fiber meet, also called synapse or synaptic cleft. In order for a skeletal muscle to contract, its fibers must first be stimulated by a motor neuron. Motor unit is one motor neuron and many skeletal muscle fibers. Motor end plate is the specific part of a skeletal muscle fiber sarcolemma directly beneath the neuromuscular junction. Neurotransmitter is a chemical substance released from a motor end fiber causing stimulation of the sarcolemma of a muscle fiber. In this case, it is acetylcholine. Synaptic cleft is a small space between neuron and muscle. Excitation-contraction coupling of skeletal muscle. Excitation-contraction coupling is the sequence of events by which transmission of an action potential along the sarcolemma leads to sliding of myofilaments. The events at the neuromuscular junction set the stage for excitation-contraction coupling by providing excitation. Released acetylcholine binds to receptor proteins on the sarcolemma and triggers an action potential in a muscle fiber. Action potential is propagated along the sarcolemma and down the T-tubules. Transmission of action potential along the T-tubules of the triads causes the voltage-sensitive tubule proteins to change shape. This shape change opens the calcium release channels in the terminal cisternae of the sarcoplasmic reticulum, allowing massive amounts of calcium to flow into the cytosol within 1 millisecond. Calcium binds to troponin and removes the blocking action of tropomyosin. When calcium binds, troponin changes shape, exposing the binding sites for myosin on the thin filaments. Contraction begins. Myosin binding to actin forms cross bridges and contraction begins. At this point, the excitation-contraction coupling is over. Sliding filament theory. It is the most popular theory concerning muscle contraction. It was first proposed by Hugh Huxley in 1954. It states that muscle contraction involving sliding movement of the thin filaments past the thick filaments. Sliding continues until the overlapping of the thin and thick filaments is complete. The changes in muscle during contraction are: the distance between the Z lines of the sarcomeres decreases, the I bands shorten, the A bands move closer together but do not diminish in length. The role of calcium in contraction mechanism. In a resting muscle cell, that is, in the absence of calcium ions, tropomyosin blocks or inhibits myosin binding sites on actin. When calcium ions are present, calcium binds to troponin, causing a conformational change in the troponin complex, which causes tropomyosin to move, which opens or exposes the myosin binding sites on actin. This results in interaction between the active sites on actin and the heads of myosin. Cross-bridge cycling. When calcium ions are present, the myosin binding sites on actin are exposed. Cross-bridge attaches. The ATP breakdown provides energy to cock myosin head. The cocked myosin attaches to the exposed actin binding site. Cross-bridge springs from the cocked position and pulls on the actin filament. The cross bridges break, and ATP binds to cross-bridge but is not yet broken down. The myosin heads are released from actin. As long as calcium ions are present, this continues until the muscle fiber is fully contracted. Relaxation. Acetylcholinesterase is an enzyme present in the neuromuscular junction. It immediately destroys acetylcholine, so the motor end plate is no longer stimulated.
Calcium ions are transported from sarcoplasm back into the sarcoplasmic reticulum. Linkages between actin and myosin are broken. The muscle fiber relaxes. Energy sources for contraction. The energy used to power the interaction between actin and myosin comes from ATP. ATP stored in skeletal muscle lasts only about 6 seconds. ATP must be regenerated continuously if contraction is to continue. There are 3 pathways in which ATP is regenerated: coupled reaction with creatinine phosphate, anaerobic cellular respiration, aerobic cellular respiration. Coupled reaction with creatinine phosphate. Creatinine phosphate plus ADP produces creatinine plus ATP. Muscle stores a lot of creatinine phosphate. This coupling reaction allows for about 10 seconds worth of ATP. Muscle fatigue. Muscle fatigue is a state of physiological inability to contract. If no oxygen is available in muscle cells to complete aerobic respiration, pyruvic acid is converted to lactic acid, which causes muscle fatigue and soreness. Muscle fatigue results from a relative deficit of ATP and accumulation of lactic acid. Oxygen debt. The oxygen debt is the amount of oxygen necessary to support the conversion of lactic acid to glycogen. This conversion is needed to replenish spent glycogen stores. Heat production, energy released is lost to heat, which helps I just hope कि आपको अभी तक सारा कुछ समझ आ गया होगा. Now we'll talk about the different types of the contraction. It can be an isometric, it can be जी मैम मोटर यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता दें. मोटर यूनिट मोटर यूनिट के मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जो नर्व है उसका सिनेप्स हो रहा है विद द मसल. दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ मोटर यूनिट. तो पिक्चर्स दिखाती है आपके लेवल पे लाइट अमाउंट भी पता हो तो काफ़ी होता है. फर्स्ट ईयर में हम इतना नहीं बताते. लेट मी फाइंड आउट. मैंने अभी आपको नेक्स्ट वीक में करवाना है ये मोटर यूनिट. ये पिक्चर्स मैंने रखी हुई है, मुझे अभी फिलहाल नहीं मिल रही. मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बता दूँगा. जहाँ सिनेप्स हो रहा है एक मोटर न्यूरॉन का विद द स्केलेटल मसल दैट इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट. और जो एरिया सिनेप्स का रहा होता है विद द नर्व, उस एरिया को जो मसल के ऊपर होता है उसको हम मोटर एंड प्लेट कहते हैं. इससे ज़्यादा आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इफ यू वुड लाइक तो मैं मसल स्पंडल और उसकी सारे बता दूंगी आपको. इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में इंट्राफ्यूजल को किस तरह करते हैं. मोटर एंड मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आवाज़ क्लियर नहीं आ रही. मैं आवाज़ ऊंची कर देती हूँ. आ रही है आपको आवाज़? अब तो बहुत आ रही है. नो मैम बहुत कम आ रही है. मुझे तो
Can you hear me? Yes, ma'am. ठीक, मैं बोल ही इस तरह की कि मैंने शुरू ही नहीं किया इसलिए। आज हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो टॉपिक्स थोड़े से रह गए सिर्फ स्केलेटल मसल में वो बता दूँगा। So there is this isometric and isotonic. Iso का मतलब एग्जैक्टली होता है कि सेम रहता है। आइसो का लफ्ज जब भी हम कहीं यूज करते हैं, आइसोमेरिज्म या नॉर्मल टर्म्स में हम कुछ भी यूज करते हैं तो आइसो मतलब सेम होता है। मेट्रिक मीन्स कि आपने उसकी जो मेजरमेंट है वो सेम रहती है, और आइसोटोनिक मीन्स कि उसकी टेंशन सेम रहेगी। सेम टेंशन रहेगी लेकिन उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। टेंशन आइसोटोनिक में टेंशन एक प्लेटो पे पहुंच जाती है, उसके बाद मसल शॉर्टन होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करें और उसके ऊपर एक स्केलेटल मसल है 1 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको आप रफली 4 kg ऑफ फोर्स अप्लाई करें तो वो कंप्लीट डेडनेस में चले जाते हैं। If we hang around 3 kg of the weight from that muscle तो वो मसल शॉर्टन हो जाता है। ये बिफोर द मसल शॉर्टन होता है, क्रॉस ब्रिजेस एक एक्सट्रीम टेंशन में आ जाती हैं टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज दैट मच कि वो एक्सीड कर देता है। यानी अगर ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है तो आपने जो यहाँ पे अटैच किया हुआ है उसके साथ हैंग किया है 3 kg, दिस विल बी लेफ्ट एट एक जो टेंशन है वो एक जगह पे मेंटेन हो जाएगी। टेंशन आपकी एक जगह पे मेंटेन होगी, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं डेवलप होगी। द लेंथ विल बी शॉर्ट, सर्टेन लेंथ जो है यहाँ पे आपने हैंग किया, टेंशन एक मेंटेन हो गई, लेंथ उसकी शॉर्टन हो लेकिन टेंशन को कोई चेंज नहीं। और आफ्टरवर्ड्स व्हेन देयर इज रिलैक्सेशन जब आपको मूव करना है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आपकी नॉर्मल। आपकी आवाज अभी भी काफी लो यस मैम। मैं कॉलेज में बैठ के ले रही हूँ विथ माई ओन नेटवर्क। आई एम सॉरी, मैं इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकती। Isotonic contraction produces the movement and that is used in walking or moving any part of the body. Isometric में क्या होता है कि the length में change नहीं आता but the tension is exceeding. जितना पहले मसल है अगर आप उसके साथ 6 kg का वेट कर देते हैं तो वो टेंशन एक लिमिट तक पहुंच जाएगी और उस बढ़ती जाती है और मसल कैन नॉट ओवरकम दिस रेजिस्टेंस और वो शॉर्ट भी नहीं होगा। जैसे ये अगर आप 6 kg का एक उसके साथ वेट अटैच कर देंगे तो जो उसकी रिजल्टिंग लेंथ है वो चेंज नहीं होगी और उसकी टेंशन बढ़ती भी जा सकती है। और फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम नॉर्मल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, जब हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, एक टेंशन मेंटेन रहती है। जैसे इफ वी आर जस्ट स्टैंडिंग, सिटिंग और पोस्चर, एक टेंशन मेंटेन है लेकिन शॉर्टनिंग नहीं हो रही। व्हाट इज अ मसल टोन? मसल टोन होती है एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन की फेज। ये बहुत स्टार्ट में मैंने बताया था कि कुछ मोटर यूनिट्स जैसे जहाँ नर्व का सिनैप्स हो रहा है विद द मसल तो वो एक्टिव होते हैं इवन व्हेन द मसल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। तो एक these contractions do not produce enough tension to cause movement, लेकिन ये इतना टेंशन मेंटेन रखते हैं कि मसल को टेंस और फर्म हालत में रखते हैं, फ्लैबी नहीं होता। This tension in the skeletal muscle is called as the tone. रेस्टिंग मसल आपका जो होता है उसकी टोन मेंटेन रहती है। टोन बेसिकली क्या काम करेगी? स्टेबलाइजेस द पोजीशन ऑफ द बोन्स एंड द जॉइंट्स। मसल फाइबर टाइप्स हम कर लेते हैं। मैम ये टोन एक दफा फिर से बता दें। अगर आप किसी पेशेंट का मसल नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन करते हैं तो जो मोटर सिस्टम की एग्जामिनेशन करते हैं सबसे पहले आप उसकी टोन देखते हैं। अपीयरेंस देखने के बाद टोन है, आप देखते हैं कि वो जो टोन है
बेसिकली जैसे रिलैक्स फॉर्म में होता है, लेकिन स्टिल स्लाइटली आपको फर्म फीलिंग आती है। वो फ्लैबी या यूजलेस सा नहीं लगता, जैसे अगर सपोज कुर्बानी के बाद आपका जो जानवर होता है उसका फ्लैबी सा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल जिंदगी में नर्वस कांटेक्ट हो रहा है विद द स्केलेटल मसल और विद एनी अदर मसल। ये जो नर्व है ये एक स्लाइट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखती है। इस रेस्टिंग टेंशन को हम टोन कहते हैं, और हम इसको जो इसकी वजह से मसल टेंस और फर्म रहता है। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, स्लो फाइबर्स और एक फास्ट फाइबर्स। बताइएगा स्लो फाइबर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया? आप लोग ट्यूटोरियल के लिए तैयार नहीं कर रहे? What am I asking? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अब आपको आवाज नहीं आ रही होगी, है ना? क्या ख्याल है? आवाज नहीं आ रही? मैम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मैंने आपसे पूछा, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया? मैम अभी फिजियो का टेस्ट है, नर्व फिजियोलॉजी ब्लड का और Look, man, I just want my sales back. Nobody's buying nothing these days. How do I find new clients? To move an arm. ये वीडियो जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये आपको नजर आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. It is only for 2 minutes. Just 2 minutes इसको गौर से सुनो। Object referred to as load, the sarcomeres in the muscle fibers of the skeletal muscle must shorten. The force generated by the contraction of the muscle, or shortening of the sarcomere, is called muscle tension. However, muscle tension also is generated when the muscle is contracting against a load that does not move, resulting in two main types of skeletal muscle contractions: isotonic contractions and isometric contractions. In isotonic contractions, where the tension in the muscle stays constant, a load is moved as the length of the muscle changes. There are two types of isotonic contractions: concentric and eccentric. The concentric contraction involves the muscle shortening to move a load. An example of this is the biceps brachii muscle contracting when a hand weight is brought upward with increasing muscle tension. As the biceps brachii contract, the angle of the elbow joint decreases as the forearm is brought towards the body. Here, the biceps brachii contracts as sarcomeres in its muscle fibers are shortening and cross bridges are forming. The myosin heads pull the actin. An eccentric contraction occurs as the muscle tension diminishes and the muscle lengthens. In this case, the hand weight is lowered in a slow and controlled manner as the amount of cross bridges being activated by nervous system stimuli decreases. In this case, as tension is released from the biceps brachii, the angle of the elbow increases. Eccentric contractions are also used for the movement and balance of the body. An isometric contraction occurs as the muscle produces tension without changing the angle of a skeletal joint. Isometric contractions involve sarcomere shortening and increasing muscle tension, but do not move a load, as the force produced cannot overcome the resistance provided by the load. For example, if one attempts to lift a hand weight that is too heavy, there will be sarcomere activation and shortening to a point and ever-increasing muscle tension, but no change in the angle of the joint.
In everyday living, isometric contractions are active in maintaining posture and maintaining bone and joint stability. However, holding your head in an upright position occurs not because the muscles cannot move the head, but because the goal is to remain stationary and not to produce movement. Most actions of the body are a result of a combination of isotonic and isometric contractions, working together to produce a wide range of outcomes. All of these muscle activities are under the exquisite control of the nervous system. Neural control regulates concentric, eccentric, and isometric contractions. लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम क्विज लेंगे, आप लोगों को आवाज आ रही? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, मैं आपको एक लिंक भेजती हूँ। लिंक नहीं भेजता, मैं आपको बता सकती हूँ। हम लिंक नहीं भेजता, कौन पे लिखते हैं? Kahoot it है, ये आप अपने क्रोम पे लिखिए एंड ज्वाइन करें। Have you heard it? मैम रिपीट करते। मैम रिपीट कर दें। मैंने मैसेज में लिखा है Kahoot it, ये अपने क्रोम ओपन करें और वहां पे लिखें। पिन नंबर नहीं, मैम ये तो गेम है। हो गया आपका? Yes, ma'am. Have you joined? मैम ये कोई ऐप इंस्टॉल करना है, ये तो नहीं ओपन हो रहा। मैम ये गेम आ रही है। Join at www.kahoot.it। आप सिर्फ kahoot.it लिख लें, आपको ज्वाइन हो जाएगा। वो इंस्टॉल नहीं करना, आप लिखेंगे वैसे ही ज्वाइन हो रहा है। किसी ने ज्वाइन किया या नहीं? मैम ये गेम पिन मांग रहा है, बता। गेम पिन मांग रहा है, गेम पिन कौन सा लगाए? ये पिन कोड मांग रहे हैं मैम। मैम पिन कोड, वो पिन कहाँ से लगाए मैम? मैम लिंक कौन सी डाल दूंगा इसमें? जी मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज में आज इंटरनेट स्लो है इसलिए। जी 313-5733 313-5733। मैम ये बता दें ओपन कैसे करना है, किस जगह से ओपन करना है? बेटा मेरे पास तो कम से कम 18 बच्चों ने ज्वाइन इन कर लिया है। अभी मैंने आपको बताया है, क्रोम पे आप लिखेंगे Kahoot it, KAHOOT.it, and then I am telling you the game pin 313-5733. रिपीट कर दें। बेटा ये निकनेम तक आ गया, उसके बाद प्रोसीड नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा प्रोसीड, आप ज्वाइन तो करें। मेरे पास सिर्फ 43 बच्चे आए हैं। Where are the rest of them?
मैम रिपीट कर दें एक मिनट वापस। आपको गेम पिन बतानी है, क्या बताना है? मैंने मैसेज में कहूट एक लिखा है। मैम गेम पिन बतानी है मैंने। 31357333। आप कहूट नाम ना लिखें। महक फातिमा, आपने थैंक यू इम्प्रूव। आप अपना नाम लिखें। जिसने कहूट लिखा है वो गलत लिखा है। AR Sims is also not appropriate. You should have mentioned your name. Don't you like your name? मैम ये लिखा गया कि यू आर इन, बस यही स्क्रीन पे लिखा आ रहा है यू आर इन। जी अभी मैं आपको स्टार्ट तब करूंगी ना जब बच्चे ज्वाइन। यू हैव टू वेट बेटा। अब एक बच्चे से तो नहीं मैं स्टार्ट कर दूंगी ना, अभी तो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। कितने बच्चे यार मेरा उधर कोई नहीं है। मैम पिन क्या है? 135733। क्या लाई है? आप अपना म्यूट करके रखिए। ये कौन सा है? चम्मच है, चम्मच। चम्मच आप बाद में ले लीजिएगा, म्यूट कर दीजिए। चलो 31357333। 313 हो गई। चले, now we are starting. It is 85 people who are in. Anybody who else wants to join, tell me now. मैंने लिंक शेयर कर दिया, इसमें से ज्वाइन करना। बेटा कहूट मैंने भी लिख दिया था। मैम इसका पिन क्या है? पिन भी मुदस्सर आमिर ने अपने मैसेज में लिखा हुआ है 31357333। तो छोटे छोटे बच्चों को ये खेलनी आती है। आई एम स्टार्टिंग इट नाउ। मैम इसका पिन बता दें काइंडली। बेटा 31357333। कितना वेट करेंगे हम? वी हैव टू स्टार्ट नाउ, लेक्चर का टाइम ही खत्म हो जाएगा। जी मैम कर दें। चलें, ओके स्टार्ट। You can see the quiz. Not bad. Few people just said कि वो swirl करता है 90 degrees पे, और 17 ने कहा कि वो kinase के through होता है, but it was much easier. The Z line just moved together. You have to create the best and the easiest one. Yes. Next. Aisha Iftikhar is on the top. Zara Fatma is on second. Umair Atiq third number पे. Then Tuba and Sabika. Next.
इक्वल आप लोगों ने आंसर दे दिए। हाई एनर्जी तभी बनता है जब एटीपी में हो जाता है और उसको हाई एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द लास्ट 3 लेक्चर्स मैं कंटिन्यूसली यही बोल रही थी। चलिए नेक्स्ट। Aisha has gone down, Faika is up. Good. False is totally wrong. नौ लोगों ने false किया, वो तो मेरा ख्याल है skeletal system 0 उनको आता है। Next, easiest question था। Again Aisha is up. Good. Next. Sabika is up. Very good. Excellent. Good, Sabika. Keep it up. This is not good. आपने relaxation तो नहीं बतानी थी। Okay, next. Amna is at 5,000 points.
It is halfway between both the channels they work. Next. So Roche is at 5,000 with Amna. Basically, आप लोगों ने सिर्फ मेरे लेक्चर सुने हैं, खुद पढ़ने की आगे कोशिश नहीं की. This reply suggests कि आपने 57 ने रेड की है, 38. Can you see the result also? Okay. Next. अगर आप शेयर कर देते हैं तो नजर आ जाए. Subat is at highest. Then Amna, then Sarosh, then Sabika, then Sania Amer. This is true. Next. Sarosh is at number 1, then Sabika, then Sania Amer, and then Faika. That's question A. But it was an easy question. Next. Sarosh is at number 1. Come on, it's an easy question. Shortening of an A band 33%. आपने 33 लोगों ने कहा है shortening an A band. Sarcomere में A band तो shorten होता ही नहीं है. There's no change in the A band. Bad. This is bad. 33 लोग जिन्होंने ये आंसर दिया है. मैम अभी लास्ट वीडियो में हमने सुना था कि शॉर्टनिंग ऑफ ए बैंड होती है. ए बैंड तो कभी भी नहीं होती. किसने कहा है? मैंने तो कभी भी नहीं कहा. ये तो मैंने आपको वो पॉइंट बताया हुआ है कि ए बैंड में तो चेंज ही नहीं आता. किसी भी वीडियो में आप देख ले, मुझे बता दीजिएगा कौन सी वीडियो आपने गौर से सुना नहीं. कैन यू सी माय स्क्रीन? Faika Rahman is on third, Subat is on second, and on first is Sarosh. Very good, excellent. Amal is runner up. मेरा गुम हो गया. फिफ्थ पे कौन है? Was on the fifth?
स्क्रीनशॉट लेके टेक द स्क्रीनशॉट एंड शेयर इट इन द आपने से कोई कर सकता है तो कर दीजिए. Very good. All our female students, so all males are just studying or I'm finishing this. और यहाँ पे वो घर के काम कर रहे हैं, है ना? So how was it? Good, ma'am. Excellent, ma'am. अच्छा था मैम, मजा आया. अच्छा था मैम. मैम मजा आया. मजा आ गया. मजा मजा आया. आ गया. Good. मैम अच्छा यस था. मैम. तो फन टाइम हो गया आपके लिए, है ना? मैम की But- भेज दीजिए. Yes, ma'am. की भेज दीजिएगा इसकी. इसकी की मैंने साथ साथ तो बता रही थी. और मेरा ख्याल है जिन्होंने कम से कम पहले 10 लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन तो मुश्किल थे ही नहीं. मैम वो क्वेश्चन का पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम कम लग. 30 seconds is enough. और कई जो मुश्किल क्वेश्चंस थे उनके लिए मैंने 1 minute 30 seconds दिया था. कईयों में मैंने आपको 60 मैम seconds दिया था, जो मुश्किल मैंने ये खुद प्ले करके खुद देखा था. See the forms for सिर्फ लेक्चर होंगे वो ये सॉल्व कर लेते हैं. मैक्सिमम उनके 2 गलत होने चाहिए थे सर. I have not received any response in the attendance. Have you seen the forms? Attendance mark कीजिए. Yes, ma'am. अच्छा, अब आप लोग अभी अटेंडेंस खुद ही जिन्होंने लगा ली है वो लगाते जाएं और सीधा बात हो जाए. There are slow fibers and then there are fast fibers. जो slow fibers होते हैं वो slowly work करते हैं and they depend on the oxygen delivery and the aerobic metabolism. They are fatigue resistance और इनको high endurance होती है, ज़्यादा काम कर सकते हैं. डायमीटर होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एटम में ऑक्सीजन की डिफ्यूजन को कर सकता है और ये हाई टेंशन को डेवलप नहीं करते. स्मॉल डायमीटर होता है, फ्यू माइक्रोफाइबर्स होते हैं, रिच ब्लड सप्लाई होती है, लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर. ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन जो मायोग्लोबिन है ये इसको रेडिश की अपीयरेंस देती है, इसलिए इसको रेड फाइबर्स भी कहते हैं. एंड दे आर यूज्ड यूजुअली विद द एरोबिक मेटाबॉलिज्म. बेस्ट सूटेड होते हैं जो एंड्योरेंस टाइप एक्टिविटीज होती हैं. इनको हम दूसरा नाम रेड फाइबर्स, स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स, टाइप 1 फाइबर्स भी कहते हैं. व्हाट आर द फास्ट फाइबर्स? ये लार्जर इन डायमीटर होते हैं, डेंसली पैक्ड मायोफिब्रिल्स होते हैं, मोर ग्लाइकोजन रिजर्व है, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया. यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज टर्म्स. इसमें सुलझाने की कोई खास बात नहीं रहती. दे आर यूज्ड they use ATP in massive amount. ये they fatigue rapidly. और जो इसको हम फास्ट फटीग फाइबर्स कहते हैं, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स कहते हैं. वाइट क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई एज कंपैरेटिवली कम होती है. दिस इज द अपीयरेंस. ये स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स हैं. स्मॉलर इनका डायमीटर है, डार्कर कलर है बिकॉज मोर मायोग्लोबिन है, फटीग रेजिस्टेंट है. ये जो है ये आपके वाइट फाइबर्स हैं, टाइप 2 फाइबर्स हैं, फास्ट ट्विच ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स है, लार्जर डायमीटर है, पेल कलर है, इजीली फटीगिंग.
Again, slow twitch fibers में oxidative metabolism होती है. They are sensitive to hypoxia. There is more capillaries of myoglobin present in there. They are resistant to fatigue. In the fast twitch, they can be again divided into two types. लेकिन अगर नहीं याद रहते तो two types जो है वो fast oxidative है और more myoglobin है, और जो 2B है वो fast glycolytic है. Yeah, this is the table which is given in your books. We will talk about the abnormalities like disorders next time या आज ही कर लें. कुछ लफ्ज बता देती हूँ. What is fibromyalgia? ये एक mysterious chronic pain syndrome होती है. Mostly females में होती है. Symptoms इसके क्या होते हैं कि the patient complains of easy fatigability, sleep abnormalities, severe musculoskeletal pain and headache. And usually the physicians, they just think that the females are depressed and that's why they get this fibromyalgia. Then there is this process of regeneration. Cardiac और skeletal muscle होते हैं amitotic होते हैं, they can lengthen and thicken. लेकिन जो smooth muscle है, they have a good regenerative ability. There is a biological basis of greater strength in men as compared to females. और skeletal muscle जो females में 37% of the body mass है, but the males have much more, around above 40%. Body strength भी nearly same होती है, लेकिन with more muscle mass, the men are more stronger. And this strongness is because the strength is because of the male sex hormones testosterone. Age-related, after around age 80, there is sarcopenia and 50% of the muscle mass is lost. That is called as sarcopenia. And there is decreased density of the capillaries, reduced stamina, increased recovery rate. Regular exercise जो कर होती है वो sarcopenia जो 50% of muscle mass है, इसको comparatively improve कर सकता है, reverse करता है. With age आपका connective tissue ज़्यादा हो जाता है और muscle fibers कम होते जाते हैं. What is there are different changes which happen with the adaptation of the environment. One is called as hypertrophy and the other is hyperplasia. Hypertrophy होती है size increase कर जाता है. The cell, if these are the normal cells, look at the size. In hypertrophy there is increase in the size. And in hyperplasia there is increase in the number of cells. ये 4 cells थे, hypertrophy में size increase किया और hyperplasia में number ही 6 हो गया 4 की बजाय. So hyperplasia is physiologically it occurs and the memory enlargement during pregnancy, the uterine enlargement during pregnancy, वहाँ पे hypertrophy भी होती है और liver regrowth हो जाती है after the partial resection. इसीलिए आप लिवर को किसी को डोनेट एक पार्ट कर सकते हैं. Then there is this inflammation and repair of the process. Pathologically, hyperplasia can occur in the ductal hyperplasia of the breast because of the अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाए या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लॉन्गर टाइम के लिए दी जाए तो देयर इज डक्टल हाइपरप्लेसिया. Benign prostatic hyperplasia आपने सुना होगा old age में males में they have this problem of urinary problems and that is because of the prostate enlargement. Then endometrial hyperplasia because as usual estrogen ज़्यादा दी जाए या viral infections. Hypertrophy कब करती है? जैसे कुछ एथलीट्स में आप देखें उनकी skeletal muscle hypertrophy की होती है. और there is compensatory hypertrophy. अगर एक किडनी को रिमूव कर देंगे तो other kidney will hypertrophy. Pathologically there is difference between physiologically यानी normal compensation में हो रही है, pathologically एक disease हो गई है. जैसे cardiac hypertrophy हो जाती है, जैसे hypertension long time के लिए आपका blood pressure raised है और आप medicine से control नहीं हो रहा है या medicine नहीं ले रहे या irregular ले रहे तो तब हार्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक हाइपरट्रॉफी. या वेल्व्स जो वेल्व्स होते हैं उसकी नोज हो. एस्थमा होता है तो उसमें स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होती है.
Then there is hypertrophy of the bladder with the prostate enlargement. This is hypertrophy with the work or compensatory. What are the various stimuli for hypertrophy? Nutritional, energy balance of the protein, hormones, testosterone, insulin, the growth hormone. Then because of the stress, it can be active training या passive stretch होगी. More जो train करते हैं उनकी type 2 type of fibers increase करते हैं. Type 1 and type 2. आपकी जो type 2B है, they are more sensitive to hypertrophy. Hypertrophy, how do you define hypertrophy? It is increase in the muscle size. Hypertrophy, cross-sectional area, more myofibrils, more in the length. Or number of muscle fibers increase? No, it occurs in the hyperplasia. This is hypertrophy and versus hyperplasia. अगर हम इनको compare करें, hypertrophy में यही number of cells हैं और इनकी enlargement हो गई है. Hyperplasia में देखो, look at the number, it has increased. ये green colored I shown कि ये number as such increase किया है normal से. What is atrophy? A stands for absence, यानी उसकी regression हो जाता है in the size. Regression of the size of the mammary glands and the uterus after the delivery. Pathologically, if you disuse or not use much of the skeletal muscle, then the skeletal muscle atrophy. There is loss of endocrine stimulus, adrenal gland का stimulus आ रहा है from other areas. अभी first year में नहीं पता चलता, उसकी वजह से वो atrophy कर सकता है. सप्लाई करेगी मसल को. अगर वो डी नर्व कर दे, आप वहां से नर्व को रिमूव कर दें, जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, कोई ऐसी हो तब आर्स्कीमिया होता है. बेसिकली दो या तीन चीजें आप याद रखें: डीनर्वेशन, डिसयूज और मैलन्यूट्रिशन. So few causes accidents. We stop over here. जो ट्यूटोरियल में होगा वो प्लीज काइंडली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस विथ योर टीचर्स और उनके साथ डिस्कस कीजिएगा. अटेंडेंस अभी भी आज 192 आई है जबकि 178 स्टूडेंट्स थे एंड दे आर लिविंग लाइक एनीथिंग. ओके, अल्लाह हाफिज़.